गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ कनिष्क काला और मैंने अपनी फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसी से पूरी की। ड्यूरिंग माई जर्नी मैंने ये पाया था कि जो हमारा कोर्स डिज़ाइन है उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें कंटेंट इतना मिल नहीं पाता करेंट बुक से कि हम अपने एग्जाम्स, चाहे वो सेशनल्स हो, इंटरनल्स हो या मेन एग्जाम्स हो, उसमें कंटेंट लिख पाए। तो इसमें एक ओवरव्यू देने के लिए और आप लोगों को एक रोड मैप देने के लिए कि हमने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, इसके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जिसकी तीसरी स्लाइड है जिसमें हम सिलेबस वाइज सेग्रीगेट करके स्लाइड्स बना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। इसका मेन एम है क्लिनिकल फार्मेसी की अवेयरनेस और स्ट्रेंथन करना इंडियन सिनेरियो एज वेल एज जितने भी हमारा फार्मा फैकल्टी मेंबर्स हैं उसके लिए। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सभी का स्वागत करता हूँ जितने भी मेरे फार्मा फैकल्टी के मेंबर्स हैं उनका और फार्मा फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे जिसका टॉपिक है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि आपके सिलेबस का सेकंड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट कवर करते हैं। So starting for the drug information center, we will go through the background. Here we will cover the definition of drug, the scenario of drug use in India, and the need of drug information center. We will also discuss the activities which are covered in providing the drug information. So first and foremost, we will go for the drug definition. So typically a drug is defined as a substance or a mixture of substance or medical equipments or supplies which are basically used for human or animal healthcare for the purpose of diagnosis, treatment, mitigation or prevention of diseases or symptoms. If we go through the current situation, the need in India, there are more than 60,000 formulations of drug which are available. And due to this massive information explosion, it is impossible for the practicing healthcare professionals to be in touch with all the transforming informations of the diverse formulations available. So, to get rid of it, the drug information is a solution. In addition to this, the increased number of drugs increases the possibility or probability of a negative impact, which is known as the irrational use of drug, which causes events like iatrogenic diseases, antibiotic resistance, adverse drug reactions, and other negative impacts to the patient. Technically, the drug information is the process of providing written or verbal information about the drugs, the drug therapy, which is given in response to a request from the healthcare professionals, healthcare organizations, patients, or either by general public. The drug information services typically refers to the activities which are performed by pharmacists in providing the information to drug use, and other healthcare professionals or team of healthcare professionals can also provide this information which are eligible to do that as per the norms. Typically, there is an area which is dedicated in a hospital or in an organization or in a drug industry which is dedicated for the activity of providing drug information, and with respect to hospital it is a section or segment or a part of hospital which usually is established for providing, receiving, collecting, analyzing the unbiased, accurate and updated information about the drug and its pattern of use. After going through the background, we will cover the introduction of Drug Information Center, in which we will go through two sections, the origins as well as the need. So in origins, the information center was established in 1964 in United States. Later in 1968, the Drug Information Center was established in United Kingdom and Australia. In 1994, Malaysia established its National Poison Center. In India, the
effort of DIC was taken by a UK-based missionary in the year 1970, and it helped to establish a drug information center at CMC College, Vellore. World Health Organization in India, with collaboration of Karnataka State Pharmacy Council, is supporting 5 different drug information centers at different states, including Haryana, Chhattisgarh, Rajasthan, Assam, and Goa. The importance and need of drug information center is that it gives technical, scientific, and objective-based drug information to healthcare professionals as well as the public. The Drug Information Center helps to generate, collect, and analyze the drug information data. And based on that analyzed information, they frame and circulate drug information materials. The Drug Information Center also helps to identify and prevent any adverse drug reactions. It also helps to give the toxicological and poisoning related information. Last but not the least, the core objective of a drug information center is to optimize the use of drug and to establish the rationality. तो इस स्लाइड में हमने ये पाया कि हमने स्लाइड को 2 सेक्शंस में तोड़ा था कि क्या इसकी ओरिजिन्स है। तो ओरिजिन्स में सबसे पहला डीआईसी हमारा 1964 में यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद 1968 में सिमिलर डीआईसी सेटअप हुए यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में। 1994 में मलेशिया में एक नेशनल पॉइजन सेंटर स्टैब्लिश हुआ। इंडिया में ड्रग इंफॉर्मेशन का जो सेटअप है वो स्टार्टेड हुआ 1970s में, जो कि एक यूके बेस्ड मिशनरी द्वारा हुआ, जिसने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में एक डीआईसी स्टैब्लिश किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया कोलैबोरेटिवली काम कर रही है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। करेंटली कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल और 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की सुविधाओं को स्ट्रेंथन किया जा रहा है इंडिया में, जो कि हैं आपकी हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आसाम और गोवा। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की? ये हेल्प करता है आपको टेक्निकल, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए, जो कि अप्रोप्रिएट ड्रग यूज को बताएगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज वेल एज जनरल पब्लिक के लिए। इसके साथ साथ जो ये डाटा कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, इसको एनालाइज करने के बाद ये आपकी पॉलिसीज और ड्रग इंफॉर्मेशन मटेरियल्स को फ्रेम करके सर्कुलेट करेगी ताकि एक सेफ्टी कल्चर डेवलप हो। इसके साथ साथ ड्यूरिंग दिस एनालाइजेशन दे विल आइडेंटिफाई द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, और ये ड्रग इंफॉर्मेशन के साथ साथ पॉइजनिंग और टॉक्सिकोलॉजिकल डेटाज और इंफॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं ओवरऑल, जिससे आपका रैशनल ड्रग यूज का जो एस्पेक्ट है वो बढ़ता है, पेशेंट सेफ्टी इनहेंस होती है। नाउ वी विल कम द टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। बेसिकली there are 3 types of drug information center. First, which function in hospitals, they are hospital based drug information center. Secondly, which function in industry, these are industry based drug information center. And lastly, which give services to the community, they are called as the community based drug information center. So basically 3 तरीके के drug information center की categorization है। First is एक है हॉस्पिटल बेस्ड, एक है इंडस्ट्री बेस्ड और एक है कम्युनिटी बेस्ड। हॉस्पिटल बेस्ड विल प्रोवाइड द सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स फॉर इंटरनल ड्रग क्वेरीज, formulary decisions, policy processes, drug use evaluations, medical use evaluations, and managing of ADRs, reporting, archiving, and publishing within the hospital. In industry-based drug information center, basically the post-marketing surveillance activity or drug development related activity or drug formulation related activities inside a company are covered. Drug related data from development in form of reports and literature are concerned with the activities of drug information center of industry orientation. In the community-based drug information centers, basically the activities of drug statistics like drug sales or use are covered. So these are the basic 3 categories of drug information center.
After covering the types of DIC, we will cover the prerequisites which are required for establishing a DIC, जो कि है हमारी लोकेशन, रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। सो DIC को इस्टेब्लिश करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स हैं, जो कि है लोकेशन, रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स। लोकेशन वाइज एज पर द क्लासिफिकेशन, या तो ये हॉस्पिटल बेस्ड होगा, या इंडस्ट्री बेस्ड होगा, या कम्युनिटी बेस्ड होगा, बट हम यहाँ लोकेशन में हॉस्पिटल वाइज को सेग्रीगेट कर रहे हैं 2 एस्पेक्ट्स में, जिसमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या तो विद इन फार्मेसी डिपार्टमेंट है या आउटसाइड फार्मेसी डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल सेटअप। इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, ऑफिस शुड बी देयर विद एन एजुकेट साइज, जहाँ की कंप्यूटर अवेलेबल हो, ड्रग इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल हो, टेलीफोन लाइन हो और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो। ये तो हो गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। इसके साथ साथ द HR रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएंगे आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बेसिकली विच द फार्मासिस्ट प्ले अ मेजर रोल। Along with this, the other requirements which include are the requisites which are required for processing the information, which are divided into 3 types: primary resources, secondary resources, and tertiary resources. Primary resources में आ जाएंगे आपके journals, basically जो है Annals of Internal Medicine, British Journal of Clinical Pharmacology, British Medical Journal, और जो भी prescribed journals होंगे as per the norms of the country or the area. सेकेंडरी रिसोर्स आपकी कवर करती है इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग। इसमें इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होती है, एब्स्ट्रैक्टिंग एरियाज होते हैं, जैसे मिडलाइन, करंट कंटेंट्स, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। टर्शरी रिसोर्सेज में आ जाएंगे आपकी जनरल रेफरेंस बुक्स, जो सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक्स हैं उस एरिया की, जैसे कि फॉर्मूले मैनुअल्स, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मैनुअल्स, टेक्स्ट बुक्स एंड अदर्स। तो इस चीज में हमारी जो रिक्विजिट्स हैं, ये बेसिक रिक्विजिट्स हैं, ये जो कंप्लीट करते हैं आपकी DIC, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट और फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन अ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। दिस इंक्लूड्स दैट द क्लिनिकल फार्मासिस्ट विल provide information on the services available in the DIC. He will respond to the query as per the nature of query. He will maintain the records of the query data and maintain the records of the processing done in the query data for future. He will also provide a regular feedback and monitor the activities of the drug information center. And last but not the least, he will maintain a drug information database. Now coming to the process of the query. How to process the query is an important step in implementing and maintaining a proper DIC service. So response to the query is done by a 5-step systematic approach known as wet-based method. The steps in this method includes obtaining information about the drug query, estimating the need of processing the query, assessing the class of request which has been done, then initiating the search based on the class in which it has been classified, then the evaluation of the literature correspondence to the query is done, and a response is given, after which the follow-up is also taken. So this is a 5-way method of responding to a drug information query. So इस स्लाइड में हमने देखा कि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बेसिकली ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज वेल एज सर्विसेज के बारे में बताएगा, अवेयर करेगा। ही विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज, जो भी क्वेरी DIC में आएंगी उनको रिस्पॉन्स करेगा एज पर द नेचर ऑफ द क्वेरी। वो वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा क्वेरी डाटा की, क्वेरी प्रोसेसिंग डाटा की, रेगुलर फीडबैक भी करेगा और मॉनिटर भी करेगा, और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एक ड्रग इंफॉर्मेशन डाटाबेस मैनेज करने के लिए हेल्प आउट करेगा, जो फ्यूचर में मिशन सेफ्टी कल्चर को डेवलप करेगा। अब क्वेरी रिस्पॉन्स करने के लिए एक मेथड है जो कि ये दिया गया है, वेटम बेस्ड मेथड, जो कि एक 5 स्टेप अप्रोच है। इसमें हम ड्रग इंफॉर्मेशन क्वेरी को स्टेप वाइज तोड़ देते हैं, जिसमें हम पहले इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रेन करते हैं। उस बेस्ड इंफॉर्मेशन पे हम नीड एसेस करते हैं कि क्या इसकी नीड है। उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस क्वेरी की को क्लास के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट क्लास वी इनिशिएट our search for the resources, we evaluate the query, and we finally give a response with a follow-up contribution. With this, the role of clinical pharmacist in the DIC and Drug Information Center process completes, and hope ये आपके सिलेबस को कवर करेगा और आपको एक रोड मैप देगा अपने नोट्स को पूरा करने के लिए और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। विद दिस, थैंक यू। अगली बार हम अगला सेटअप करेंगे। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन विद द रेफरेंस स्लाइड। इस स्लाइड में राइट हैंड साइड में 2 यूनिट्स का मेंशन है, यूनिट 2 और यूनिट 5, जिसके सबसेट एलिमेंट्स और जिसके सब्जेक्ट एलिमेंट्स को ये कवर करती है, जो कि रिलेट होते हैं आपके ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से और एनालॉजिकल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर से। इस स्लाइड का मेन एम था कि आपको एक रोड मैप मिले कि आप अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे वो इंटरनल्स हो या सेशनल्स हो या मेन एग्जाम्स हो, उसके लिए कैसे अपने नोट्स तैयार करें ताकि आप अच्छा कंटेंट वहाँ पे डिलीवर कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि इस स्लाइड ने आपकी एक सहायता की हो, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी इस पे दें, ताकि हम क्लिनिकल फार्मेसी को आगे बढ़ाने में या इसको स्ट्रेंथन करने में कुछ योगदान दे पाएँ एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्कशन इन क्लिनिकल फार्मेसी। आपका सुझाव इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और मैं ये प्रयास करूँगा कि आगे भी सब्जेक्ट वाइज जो हमारे यूनिट्स बचे हैं उन पे मैं एक स्लाइड सेशन और करूँ। और प्लीज़ मुझे अपने सजेशंस आप भेजें, अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या कुछ आपको कोई इंटरवेंशंस हैं तो प्लीज़ आप भेजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट। विद दिस, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद।